My name is Hameed Asghar, and on behalf of Institute of Freelancing and PF Finishing School, I welcome you all. Yesterday we discussed about the graphic design, the initials, and today is the second lecture, which is pertaining to the graphic design and what exactly is the graphic design and how can you design and how can you start the graphic design. That's our today's lecture. Okay, see, let's get started. Okay, Ji. So graphic design is a form of visual communication used to convey a message or information to an audience. It is a visual representation of an idea, relying on the creation, selection, and organization of visual elements. Simple words में ग्राफिक डिजाइनर कौन होता है, कौन मुझे आज बताएगा. The first and foremost, anyone you can unmute. We have plenty of long list of students, some of them from China, as well as from Germany, as well as from, okay, there is a student from Abu Dhabi also, and Adan is from Abu Dhabi, and there's a student from Saudi Arabia also. There's a long list of students who will let me know, who will let everyone know that exactly what exactly the meaning of graphic designer or the graphic design. Yesterday you spoke about your heart. Yes, Asma Malik, please. Yes, sir. I just want to ask whether I should go for English or Urdu. As you wish. That's very much your choice because there are international participants also. So I must say, That's and why I must I'm saying encourage if you. I will speak in Urdu, maybe they will not understand that or Okay, something like that. okay, no problem. Feel Sir, convenient. as I told earlier, like just like we say that the person, someone is a designer, fashion designer or something like that, it means he is practically a designer. He is designing some clothes or let's suppose we say interior designers. They are designing the house. When we talk about the graphic designer, graphic is basically means related to computer. So graphic designing means like you are designing something, but for that you are using computer. Like you are not doing it practically or live. Okay. So And let me tell that's you, अगर इसी में आप एक line add कर दो, the visual communication, as I am communicating directly with you means I'm speaking and you are listening. But let's suppose if I'm not speaking, how would you be able to understand? And probably there is a bridge, there is a graphic designer who comes in between, who create some kind of design, some kind of graphic designs, which actually communicate visually. Correct? exactly. Yes, exactly. Excellent. Okay. Thank you very much, Asma, for joining me. Let's suppose we are challenging. Let's move one step ahead, and there are so many students. Uh, German student is late, and student from Lahore is also late today. So that's very bad. You should be on time. Okay, Ji, the history of graphic design. The history of graphic design can be traced from the origins of human existence, from the canvas of Lascaux and to Rome Trojan's columns to illuminated manuscripts of the Middle Ages to the neon lights of Ginza, Tokyo. And instead of going for this much complex sort of English, let me explain you again. The meaning of this whole is कि जब से इंसान है उस टाइम से he has been using visual communication methods. Yesterday we spoke about the same thing, and that is something which I intend कि आज भी हम उसको थोड़ा सा further continue करें, and that's basically the history of the graphic design. Correct? So जिस तरह मैंने yesterday वाले introductory session में आपको बताया था कि जब से human is there, human का चूंकि अल्लाह ताला ने ब्रेन तो दिया इंसान को कि वो उसमें सोचने समझने और फिर सोच समझ के ट्रांसलेट करने की सलाहियत, that is something which is built in into the human being. So regardless the human who was living either in the आजकल के दौर में जिस तरह we build the houses and we stay there, or
अगर आप हिस्ट्री में जाएं, द पर्सन हु यूज्ड टू लिव इन द केव्स इन द माउंटेन्स, वो भी उनके अंदर भी ये सेंस थी, और वो केव्स के अंदर ये ग्राफिक डिजाइन की डिफरेंट चीजें, कि हमारा घर की शेप किस तरह की होनी चाहिए, घर के अंदर फर्श का डिजाइन किस तरह का होना चाहिए, एंड देन देयर आर डिफरेंट एनिमल्स ऑफ दीज सॉर्ट ऑफ शेप्स, ये सारी की सारी चीजें ह्यूमन के साथ साथ क्रिएट होती रही। करेक्ट, सो दैट्स बेसिकली द हिस्ट्री। लेकिन दैट रीचेज, जिस तरह टाइम गुजरता गया, दैट हैव रीच एंड दैट हैव एडेड, और उसमें बहुत ज्यादा चीजें ऐड होती गई। जिस तरह yesterday we discussed about the typographics, the typographics actually added the graphic design, कि वो किस तरीके से करते करते reach to that advanced stage, correct? So that has been added, and because of that, historically hum karte 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 we have reached to this stage that everyone has this computer right now, everyone uses mouse, everyone uses keyboard, everyone, by with the help of keyboards and the mouse, you create different type of graphic elements. As you can see on your screen, there are so many methods, so many communication mediums, there are so many graphic design से related चीजें that has been displayed on your screen. And while looking at any of this, any of the individual, is there anyone who can just let me know that what exactly is the shape of this? Let me ask, what exactly is the shape of this? Anyone from this class? Let's say सर yes, सर ये yes, yes, Nana, please. सर ये वीडियो गेम खेलने का जो Hundred जो percent. रिमोट होता है Hundred वो percent, very right, exactly right. This is the icon, or this is the design of uh, peanut shop. No, no, no. This is not peanut shop. This is actually, we used to call this game के लिए वो play करते हैं ना, what we call it. There are something like this. Yeah, let's suppose. Let लाइक me. रिमोट Yes, remote controller, or remote nahi, actually controller, or something like game controller, we used to call this. Perfect. And by the way, joystick, what exactly joystick. is at the right, bilkul right corner pe, what exactly is this? Wi-Fi. 100%. Sir, You know, what? this one, at the right, Okay. exactly. Any idea about this? This is Sir, Wi-Fi. Wi-Fi Yes, connection or something. absolutely. That is why we used to call this graphic design as a symbol of everything. You know, we create something, and without telling the people, everyone would understand that what exactly is the meaning of this. Correct? So इस तरीके से we have reached to that today's stage जहाँ पे हमारा graphic design has emerged with the help of computers, with the help of different tools, keyboard, mouse and tablet. आपको ये नजर आ रहा होगा, graphic designers, senior graphic designers, they actually develop this kind of things, and that's how there are so many different options which merged in between this. We used to call them different services, and we offer all those services under this graphic design. करेक्ट, मैं जल्दी जल्दी में लेकिन स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करते करते वी हैव रीच टू दिस स्टेज कि इंशाल्लाह आने वाले टाइम में हम, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें वी विल ट्राई टू प्रोड्यूस, एटलीस्ट चले सारी नहीं लेकिन कुछ हम ज़रूर इसमें से प्रोड्यूस करेंगे, सो दैट कि आपका एक्सपीरियंस एंड एक्सपोजर बढ़े. There are plenty of things which I'll be sharing other than this class also, so that कि आप उसको go through करने के बाद there are number of different videos जिनसे आप knowledge gain कर सकते हैं. Correct? Let me hold on here for a second and let me introduce you all. We have a guest participants from our previous and maybe from previous to previous. There is Taskeen. Are you there? I want you to please unmute. Assalamualaikum sir, yes I'm here. Yes, walaikum assalam. Taskeen, from which badge you were? Three? Sir, I'm from yes Two. three. Three. Okay, and today we have reached to the badge fifth. Great, Yes sir. excellent. And I put up a request to Taskeen to join us in this session, so that this would be a kind of grooming session to all of my participants जो आज हमें join कर रहे हैं. And would you believe it, Taskeen, that we have alhamdulillah reached that state that we have international participants along with us today.
And Sir, it's a great job. excellent. Great. So you were from the previous graphic design class also, but due to some reasons you have in between you have skipped the lectures and then you actually came back and you actually started it again. Correct? The first and foremost, Yes, sir. that is the commitment from my side. My dear student, at any moment of time, right? At any moment of time, if you feel any difficulty, as Khansa is also there, ये भी हमारी और participants हैं, तो at any moment of time, अगर आपको कभी भी कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जाए या आपको ये फील हो कि शायद मेरा अभी वो लस्ट टू बिकम अ ग्राफिक डिजाइनर वो अभी भी कुछ रह गया उसमें या कुछ चीजें रह गई उसमें, यू आर ऑलवेज एंड मोस्ट वेलकम. दैट्स व्हाट माय कमिटमेंट इज. तस्कीन, यू कैन सेकंड मी ऑन दिस कि जब आप आई थी, इज इट द सेम वर्ड व्हिच आई सेड यू आल्सो? यस सर, बिल्कुल ऐसे ही था. Correct. So आज करते करते हमारा fifth batch is on and you are still a part of this class, and that's यस. the great thing which you are doing. So that means this happens due to any difficulty, any confusion. आप दरमियान से आपको मजबूरन skip करना पड़ सकता है. But I just do not want that my students and participants who are from this class, they should leave us at any time. Not at all. Correct? So that's the commitment with this complete class. कि अगर आपको कभी भी कोई confusion हो, you can get back to me and join the class at any moment. Thank you very much, Taskeen, for joining me in this session. And थैंक यू सर. keep थैंक यू keep सो keep मच. learning and keep doing different exercises. And जो हम लोग साथ साथ करते रहेंगे, I would request कि आप भी बिल्कुल उसी तरह ही सबको फॉलो करते रहें. जो डेली के असाइनमेंट्स, डेली के टास्क, डेली सर. के रिकॉर्डिंग्स हैं, उनको गो थ्रू करें. And I will be exclusively asking you couple of questions in every class that is from the previous classes. Correct? So as you were not in the previous class, so probably आज तो आपसे कोई क्वेश्चन नहीं होगा. लेकिन this is a reminder for my every student that be ready for that. Correct? हम सबसे पहले recap किए करेंगे previous class को और उसके बाद आगे move किए करेंगे. Okay जी, let's get back to the normal session, normal course of session, and we were talking about the services. अच्छा जी, कौन कौन सी सर्विसेज हैं विच कम्स अंडर द ग्राफिक डिजाइन कैटेगरी, इसके मुतालिक मैं पूरी कंप्रीहेंसिव एक कंप्लीट ट्रेनिंग अलहदा से आपको दूंगा, जिसमें ऑलमोस्ट मोर देन 50 से ज़्यादा कैटेगरीज हैं जिसमें मैं आपको बताऊंगा, सो दैट कि आपके लिए फ्यूचर में दिस शुड बिकम वेरी इजी फॉर यू टू ज्वाइन योर एक्सक्लूसिव फील्ड या जिसमें भी आपने अपना फ्यूचर कैरियर. दैट is not limited to websites, but that includes the website. That includes the branding of any brand. That includes the infographics. That includes the logos. That includes the landing pages, brochures, web banners, and there is a long list. Correct? So कुछ चीजें हम इस सेशन में करेंगे, कुछ प्रीवियस सेशन की आपसे शेयर करेंगे, और कुछ मेरा आपसे वादा रहा कि आने वाले सेशन में जिस जिस तरीके से हम रिकॉर्ड करते जाएंगे, अगर तो आपने इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रीलांसिंग को ज्वाइन किया हुआ है तो आपको फ्री में वो सारी की सारी चीजें मिलती रहेंगी. ओके जी, इसके अलावा कौन कौन सी चीजें हैं? दैट इंक्लूड्स पोस्टर्स, विजिटिंग कार्ड्स, स्टेशनरीज, लेटर हेड्स, स्टैंडीज, magazine designs, brochures, flyers, email designers, WhatsApp marketing, and catalog designing. Right? So this is all a part of graphic design services, but this is just not limited to only this. These are just the examples, just probably 11 or 12 examples, लेकिन I have more than 100 examples right now. So वो इंशाल्लाह आने वाले sections में मैं आपसे in detail share करूँगा. लेकिन before that we move, is there anyone who can just let me know कि what exactly is the thing that is one of the most basic graphic design tool that should be in your hand before you start? Everyone should give me the answer in the chat box. Idea? Yes, very good. Move tool. We're not talking about tool, Khansa. You are a senior student now. You should not be saying the move tool. No, no, no. We are not talking about the software tools. No, we are talking about, देखो, look at this. The junior ones or the new ones, they are coming with a different of new things. Mouse, internet,
brainstorming, very good answer. जिसने भी ये brainstorming answer दिया, that was Ahmed Kashir. And Zulfikar, idea, very good. And laptop, yes, exactly. Nana is said laptop, correct. उसके अलावा लेकिन लेट्स सपोज अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, सो डू यू थिंक कि आप ग्राफिक डिजाइनर नहीं बन सकते? नो, इट्स नॉट लाइक दिस. माउस, नो, माउस लाजमी नहीं है कि माउस ना हो. तो माउस अगर नहीं होगा तो आप ग्राफिक डिजाइन नहीं कर सकते. ग्राफिक डिजाइन तो फिर भी आप कर सकते हैं. Concept, idea, color. Okay, there are out of 16 participants, most probably just 10 has participated. Still we are waiting for the right answer and the right man. Rather, I would be requesting Sajda Riaz. Okay, paper pen. चलें जी, आज का इलेक्ट्रा टीवी नाम कर देते हैं किसके? आमिना मंसूर के. My dear student, the, the pencil is the one, the most basic initial graphic design tool that should be always, always in your hand to become a graphic designer. You remember, we जो भी आप कभी भी किसी को ऐसा करते देखे ना कि इन फ्रंट ऑफ द पेपर ही यूज्ड टू डेवलप समथिंग, वो पेंसिल से कुछ ना कुछ स्केच, कोई ना कोई ऐसी चीज कुछ ना कुछ बनाता रहता है. सो वी यूज्ड टू कॉल हिम दैट इसके अंदर एक डिजाइनर, बिकॉज ही यूज्ड द जी सर. पेंसिल, he used the pencil and the pen to create the ideas or create the visuals, correct? So Sir, that is, I have a question. yes please. Sir, as you said that it's basically the visual communication, like Yes, we have to draw something on PC. So I want to ask that what's the need of pencil then? Like we have idea in our mind, initially simply draw that on I'm PowerPoint and that's all. you What's have the just use of pencil? you have just missed this one word, basic. I'm not talking about the advanced level. Advanced level में even laptops भी नहीं आते. There are 3D goggles now which have reached, this is more advanced version than the laptops. You are लेकिन talking I'm about talking about the history? most basic graphic design, correct? Got it? Yeah. Okay, good. So the most basic graphic design tool, every individual, everyone who is from this graphic design field, let me tell you, उसके हाथ में पेंसिल और पेपर जरूर होना चाहिए. So in this case, actually आज का इलेक्ट्रा टीवी जाता है जनाब आमिना मंसूर के नाम, because she is the one, she came up with this option. Zulfikar came after this, and चलो आधा आधा कर देते हैं, आधा आमना and आधा जुल्फिकार. ठीक है जी. So that is the most important thing you must have to remember. And by the way, once you become inshallah graphic designer, let me tell you, my dear students, thanks a lot Mansur, thanks a lot Amna. Actually, once you become a graphic designer and once you reach to any professional field, or when you apply for any graphic designer, let me tell you, my dear students, this is the question people used to ask, and the interviewer would ask you. So be ready for this. Thank you, Zulfikar. Jazakallah. Okay, ji, let's define the graphic designing one step more so that कि जल्दी जल्दी से हम कर दें. By definition, graphic design is the art or profession of visual communication that combines images, words, lines, shapes, ideas to convey information to any audience, especially to produce a specific effects. In other words, graphic design is communication design. It's a way of conveying ideas through visuals and designs. So you must have to remember this, the definition of graphic design. Again, let me tell you, my dear students, when you reach to the international market and when you will be applying for anywhere, this is the usual question people used to ask, that what exactly is the definition. Okay, so let's move one step ahead. The elements of graphic design, yesterday we discussed, that is size, line, shape, texture, space, colors, and things like that. I just do not want case के ऊपर जाएं.
you can just refer back to the initial class and you know exactly that what are those basic elements of the graphic design. So let's move one step ahead. Principles of graphic design. That is the most important thing for you to understand. The principle of design suggests how the designer should best arrange the various components of a page layout to ensure the elements of the overall design are connected to one and another. The principle of design includes following. What? The balance. Balance is the graphic design done by using symmetry and asymmetry. This is achieved by balancing the design in weight, meaning shapes, line and other elements distributed evenly. Let me tell you the most simplest example. देखें, अगर आपके पास कोई भी पैकेजिंग आती है किसी भी चीज की, let's suppose it's a box of something. What do you think? उसकी कितनी साइड्स होती है? That is quite obvious. One is the front, the other one is the back, and the left and right, and top and bottom. What do you think? The name of the company or जो product का name है, that should be on the bottom side or the top side? Just The top side. sorry, say it again. Top. Top पे होना चाहिए उसको. Sir, please repeat the question. Let's suppose I'm talking about any of the brand. Let's suppose it's I just not want to mention any of the name, but top. सबके सब बड़े स्टूडेंट्स सबके सब गलत हैं. Sir, please repeat the question. Brand. खंसा you आज का आधा टीवी आपका. Front. Yes, absolutely. देखो, we are talking about the brands. Correct? Brand means कि brand का नाम किस तरफ आएगा. There are different sides of packaging. किसी भी एक बॉक्स का front, back, left, right, top, bottom, these are the sides. Correct? So brand का नाम किस तरफ आएगा? That always has to be a top or the bottom or the left or right or front or back. सारे के सारे बोले, सारे के सारे चैट बॉक्स में ये मेंशन इट. नो टॉप. दैट शुड ऑलवेज बी एट द फ्रंट. यस, ये एक बेचारा टीवी है इसलिए बहुत सारे बंदे आपके विनर हैं, इसलिए एक टीवी में से कुछ भी नहीं बचेगा सबके लिए. सो वेरी वेल सेड. लेकिन नीड नॉट टू बी वरीड क्योंकि हम कौन सा असल में दे रहे हैं, इसलिए हर एक को एक एक टीवी टेलीविजन, इलेक्ट्रा का टेलीविजन हर एक के लिए एक एक गिफ्ट आज. ओके जी, फ्रंट. ओके गुड. अच्छा जी, फ्रंट इज दी ऑलवेज. देखो, बैलेंस होना चाहिए डिजाइन में, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता. अच्छा चलो, लेट मी गिव यू अनदर नेम. व्हाट डू यू थिंक द प्राइस टैग शुड बी ऑन द विच साइज? नो प्रॉब्लम साइदा, नो प्रॉब्लम एट ऑल. Price tag should be on which side? Is that on the front or the back or the top or the bottom or left or right? It can be on the left side, it can be on the bottom side, it can be on the top side. Lekin the importance of that, the balance, we are talking about the balance in different things. So let me tell you again that it's not at all necessary that we should have the price tag that should be on the front tag या उसे brand से बड़ा कर दो. Correct? So basically you have to understand the basic concepts. So that is called the balance of the design. उस डिजाइन के अंदर सारी की सारी चीजें. Then is the alignment. Do you think is it possible कि सारी की सारी चीजें center align हो and brand का name should be left align हो जाए? It's by any means, by any standard, this is not possible. Correct? So alignment is about keeping the design organized. All aspects of the design should be aligned with the top, bottom, center or the sides to create a visual connection between the elements. हम जो जो एक्सरसाइजेस करेंगे उसमें हम ये सारी की सारी चीजों का ख्याल रखेंगे. करेक्ट? लेट मी टेल यू, हम लेट्स सपोज वी आर गोइंग टू स्टार्ट, हर कोई अपना अपना विजिटिंग कार्ड डिजाइन करेगा. अब ये हो नहीं सकता कि विजिटिंग कार्ड की बेसिक डिजाइन को अंडरस्टैंड करने के बाद आप कुछ चीजों को सेंटर अलाइन कर दें और कुछ चीजों को लेफ्ट अलाइन कर दें. सो दैट शुड नॉट बी अ बैलेंस, दैट शुड नॉट बी द अलाइनमेंट. सो इस ये बेसिक चीजें हैं.
व्हाट डू यू थिंक हर जगह हो सकता है? राइट आंसर क्या है? देखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ द प्राइस टैग इज नॉट एट ऑल, इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है कि उसको हम फ्रंट पे जगह दें। इसलिए अगर फ्रंट पे नहीं है तो आप किसी भी जगह उसे जगह दे सकते हैं। दैट कैन बी इवन ऑन द बॉटम, दैट कैन बी एट द टॉप, दैट कैन बी एट द लेफ्ट, राइट और बॉटम। लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्रांड नेम। द ब्रांड नेम को अगर आप इतनी लेस इंपॉर्टेंस देंगे, सो दैट इज नॉट द राइट थिंग बीइंग ग्राफिक डिजाइनर। या जो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द ग्राफिक डिजाइन है, उसमें ये सारी की सारी चीजें आपको केटर फॉर करनी है। दैट इज समथिंग वी वर टॉकिंग एंड आई थिंक यू हैव मिस्ड दैट लाइन। ओके जी, अलाइनमेंट के बाद द प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी क्या करती है? क्रिएट अ विजुअल रिलेशन बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ द डिजाइन। It minimizes clutter, increases viewer comprehension, and provides a focal point for viewers. What do you think? Again, referring back to कोई भी ब्रांड, कोई भी ऐसा डब्बा एक ले लें, लेट्स अ बॉक्स, एंड बॉक्स का सबसे टॉप एरिया जिसके ऊपर यू थिंक के फोकल पॉइंट सबसे ऊपर जाता है, वो कौन सी साइड होती है? नथिंग एज सच, इसमें कुछ भी ऐसा मुश्किल नहीं है अंडरस्टैंड करने के लिए। दैट इज वाई पैकेजिंग की हमेशा ऑलमोस्ट सेंटर से थोड़ा सा ऊपर, इन बिटवीन। लेट मी टेल यू, अगर फ्रंट पोर्शन के दो पार्ट्स किए जाएं और जो अपर पार्ट है उसका सेंटर इज योर फोकल पॉइंट। एंड हमेशा याद रखें कि ब्रांड नेम्स यूजुअली ये होता है कि अगर बॉक्स की पैकिंग है तो ऊपर होंगे, अगर शॉप अगर प्लास्टिक की पैकिंग है सो दैट वुड बी इन अ कर्व्ड शेप। तो कर्व्ड शेप में अगर आपने ब्रांड को ऊपर प्लेस करना है तो दैट हैज टू बी ऑन द बॉटम साइड। और अगर आपने लेट्स सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट कोई ऐसा ब्रांड ले लें, बिस्किट्स, नो बिस्किट्स का तो है बॉक्स होता है, लेकिन कोई कोई ऐसा जेन में लाओ ऐसा ब्रांड, J dot, yeah, that's even okay. That's even okay. Starbucks or maybe something like this. ठीक है ना? So you can very well understand now once you move to the market. ना, so these are the basic principles which always triggered in your mind because आपके अंदर का वो जो ग्राफिक डिजाइनर है वो आहिस्ता आहिस्ता इन सारी चीजों को ऑब्जर्व करना शुरू कर देगा। ठीक है ना? कि इस डिजाइन में लेट सपोज इट्स अ ह्यूज बिल बोर्ड विच इज एक्चुअली एट द बिल्डिंग के टॉप पे लगा हुआ है, विच इज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 100 फीट बाय लेट सपोज 100 feet. Lays is a very good example. Lays, exactly. I was talking about this. I was thinking about this, लेकिन मुझे ब्रांड नेम नहीं याद आ रहा था. But anyway, so जब आप बड़े होर्डिंग्स पे जाते हैं, so उसके डिजाइन के जो प्रिंसिपल्स हैं, that becomes different. लेकिन जब इतने सारे ब्रांड लेस को अगर लेट्स की एडवर्टाइजिंग को यू पिक्ड अप एंड लेट्स ब्रिंग इट टू दी छोटा सा वो जो 5 रुपए या 10 रुपए का पैकेट है, अगर आप उस पर ले जाते हैं तो उसकी प्रॉक्सिमिटी एंड द एलिमेंट्स, द बैलेंस है ना, वो चेंज हो जाता है। सो यू हैव टू थिंक अबाउट एनी ऑफ द ब्रांड जिसको हमने फ्यूचर में जाके हम डिस्कस करते रहेंगे। अच्छा जी, repetition is a very very important. Once you have chosen how to use your elements, repeat those patterns to establish consistency throughout the design. This will strengthen the design. कभी भी ऐसे नहीं हो सकता कि अगर मेडिसिन की कोई एक शॉप पे जाके आप कोई भी बॉक्स उठाएं किसी भी मेडिसिन का या लेट्स सपोज बिस्किट्स का, तो एक साइड उसकी रेड और दूसरी ब्लू और तीसरी येलो या कुछ सारी की सारी डिफरेंट शेप्स में नहीं होगी। दे विल ऑलवेज बी इन दी रेपिटेशन में होंगी। टेक्स्ट जाहिर ऑफ कोर्स चेंज होगा ऑन द डिफरेंट साइड्स, लेकिन जो बेसिक डिजाइन है ना, as we all are designers, we are thinking about the design aspects, so repetition उसके डिजाइन की बेसिक्स वो सारी की सारी होंगी। Then the contrast. Contrasting is used to emphasize certain aspects of the design. Using contrast allows you to stress difference between elements, ultimately highlighting the की एलिमेंट्स। इसके ऊपर हम आने वाले टाइम में बहुत डिटेल में इंशाल्लाह चीजें डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ ग्राफिक डिजाइन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओवर टाइम ग्राफिक डिजाइन हैज बिकम प्रिटी मल्टीफेसेटेड। ठीक है, the overall concept is composed of different fields and specializations. Here are some of the most common type of graphic design. Let's suppose the corporate design. You might have heard this word corporate design. What this corporate design is? Corporate design has to do with the visual identity of a company.
any visual element that makes up a brand identity, such as a brand's logo, stationery, websites, etc. All these sort of things called corporate designs. Then uske baad, the next is the marketing and the advertising design, probably one of the most widely known types of graphic design. Marketing and advertising, when the most people think of the graphic design, they are most likely thinking of the marketing and advertising design. बिल्कुल इस तरह ही publication design. Publication design traditionally refers to the print medium. जब आपने किसी के लिए बुक पब्लिश करनी हो, बीइंग ग्राफिक डिजाइनर, सो दैट मींस एंटायरली डिफरेंट थिंग. एंड देन इसके अलावा पैकेजिंग डिजाइन. यू ऑल नो, जब भी कोई चीज नई मार्केट में इंट्रोड्यूस होती है, उसकी पैकेजिंग पहले कोई ना कोई ग्राफिक डिजाइनर वो प्रोड्यूस करता है. एंड दैट, इसके अलावा द वेब डिजाइन. वेब डिजाइन हमारा एक वेब डिजाइन का एक कोर्स भी है, एंड मोस्ट प्रोबेबली आने वाले दिनों में मैम तस्कीन, शी इज विद अस, शी विल बी असिस्टिंग मी इन दैट कोर्स. और वेब डिजाइन में हम ये सारी की सारी चीजें, टाइप्स ऑफ ग्राफिक डिजाइन को एस्थेटिकली लेकर चलेंगे साथ साथ. Correct? So that's the graphic design. Now that we have covered the different type of graphic designs, let's tackle the next big question. And that question is, what is a graphic designer? इतना कुछ अंडरस्टैंड करने के बाद, गो थ्रू करने के बाद, this is, my dear student, I will ask you, I will repeat it, and I'll ask you on daily basis that what exactly is a graphic designer. So here is the answer. To put it simply, graphic designers are visual communicators and problem solvers. Correct? So you can make up your portfolio as graphic designers and visual communicators also. राइट. सो ये था हमारा डियर स्टूडेंट्स आज का सेक्शन, आज का हमारा सेशन. थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे सेशन.